this is one of the easiest topics that you have on paper 3. Let's try to understand this. ये modulus होता क्या है सबसे पहले तो ये देखते हैं. Modulus function क्या होता है? ठीक है, let's talk about that. अच्छा, it's something that represented by these two vertical lines. ये जो दो lines हैं इसके दरमियान में कोई number लिखे ना. Like this, for instance, -3. This is read as modulus of -3. जो अंदर नंबर है इसका मॉडुलस ले रहे हैं आप. जो बाहर वर्टिकल लाइंस हैं ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, इट्स अ फंक्शन जिस तरह स्क्वायर फंक्शन होता है, राइट? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव -2 का स्क्वायर, ये जो 2 ऊपर है ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन को स्क्वायर कर रहा है. -2 का स्क्वायर का मतलब है इट्स -2 मल्टीप्लाइड बाय -2. दैट्स व्हाट इट मींस, राइट? नाउ modulus is also a function. Now what exactly does this function do? ये function basically आपके पास जो भी नंबर इसके अंदर इनपुट होता है उसको पॉजिटिव कर देता है. ठीक है, जो भी अंदर आप इनपुट करते हैं उसको पॉजिटिव कर देगा. सो फॉर इंस्टेंस इफ यू गॉट मॉडुलस ऑफ -3, दिस इज द सेम थिंग एज सेइंग 3. अंदर नेगेटिव नंबर था उसने उसको पॉजिटिव कर दिया, राइट? दैट्स व्हाट दिस फंक्शन डज. ठीक है, सिर्फ ये करता है. If you have, for instance, modulus of 4, अब 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ही रहेगा और आपको 4 ही रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, so if you input a negative number inside this function, this becomes positive. If you input a positive number, it remains positive. It does not change. All right, so that's the first thing. That's how you understand this function. So whatever is input inside this function, it makes it positive. All right. So that's the first thing. Let me just write that here. Anything you input inside a modulus function the modulus function, it makes it positive. That's the whole purpose. That's the whole function of this thing, modulus function. Okay. Achha, now what are we supposed to do? We are supposed to be able to solve equations and inequalities involving the modulus function. So for instance, let's start with something very straightforward. Let's say we've got modulus of x and that is equal to 7. This is an equation, right? Equation solve करने का मतलब क्या होता है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. So for instance, if you had x plus 3 equals 7, इसका सोल्यूशन क्या होता है? x equals 4. Why? Because 4 यहाँ पे इनपुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, right? But now we've got modulus of x equals 7. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि हमें वो x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड. ठीक है, नाउ थिंक अबाउट दिस. एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो अंदर आपने x इनपुट किया है वो 7 हो. अगर आप 7 इनपुट करोगे तो 7 का मॉडुलस 7 ही होगा and this equation would be satisfied. But that's not the only possible answer. There's also another possible answer, and that is कि अगर आप यहाँ पे -7 इनपुट कर दो तो -7 का मॉडुलस भी तो 7 होएगा. तो ये दोनों इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं. Why? Because मॉडुलस ऑफ 7 भी 7 होता है और मॉडुलस ऑफ -7 भी 7 होता है. तो इसलिए इसके दोनों सोल्यूशन से बनेंगे, एक +7 और एक -7. Does everyone get this? Any problem with this? Any problem with this? No? No, sir. Okay, I'll just take a 30-minute break here. I'm sorry. There's a zan going on here. Just a 30-second break, and then we'll resume, okay? In the meantime, if you have any questions, you can also let me know.
अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल होगी, राइट? मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स 7, इसमें हमने कहा कि x की वैल्यू एक 7 आ सकती है और एक -7 आ सकती है. Now let's start making it slightly more complicated. Let's say we've got something like this. X minus 4 modulus, that equals 9, let's say. ठीक है? ये equation है हमारे पास. Now, how do we think about this? अब लेफ्ट साइड पे देखें x minus 4 आ रहा है. x minus 4 के पूरे के ऊपर मॉडुलस है, राइट? अब क्या होगा कि जब इस मॉडुलस के अंदर आपके पास 9 आ जाए, तब भी 9 का मॉडुलस आपको 9 दे देगा, या फिर इस मॉडुलस के अंदर वाले पार्ट के अंदर -9 आ जाए, तब भी आपको रिजल्ट 9 मिल जाएगा. तो मॉडुलस के अंदर या तो +9 आ सकता है या -9 आ सकता है. Those are the two possibilities that you can have. You either need a +9 or a -9 inside. So what you do for that is you say कि अच्छा, जो मॉडुलस के अंदर वाला पार्ट है ना, वो या तो 9 हो जाए या फिर -9 हो जाए. इन दोनों में से एक चीज हो जाए, राइट? सो एक पॉसिबिलिटी आपको इससे क्या मिलती है, x इक्वल्स 13, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपको इससे क्या मिलती है, x इक्वल्स -9 + 4 विच इज -5. ये इसके दो आंसर्स होंगे इस इक्वेशन में. ठीक है? सो दैट्स जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट दिस लॉजिकली. इसका एक फॉर्मल प्रोसेस हम अब देखते हैं, बट दिस इज जस्ट टू बिल्ड योर इंट्यूशन बिहाइंड इट कि मतलब ये क्यों हो रहा है इस तरह से. आप यहाँ पे अगर 13 इनपुट करते हो, जो आपका एक पॉसिबल आंसर है, 13 इनपुट करने से क्या होता है, यू गेट 13 - 4 का मॉडुलस, which is modulus of 9, and that gives you 9. That's one possibility. If you were to input -5, उससे क्या आएगा, -5 - 4 का modulus, that gives you -9 का modulus, which turns out to be 9, and that is your final result. Okay? That is what you have on the right side. तो ये दो possible answers इसके हो सकते हैं. ठीक है? अब ये तो हमने लॉजिकली सोच के किया, हम अभी आगे देखेंगे. These things become slightly more complicated gradually. कभी कभी अक्सर ये होगा कि दोनों साइड्स पे x के टर्म्स में कुछ आ रहा होगा, तो फिर ये मेथड थोड़ा सा इस तरह से लॉजिकली दिमाग में सोचना मुश्किल हो जाता है. तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना, वी हैव अ स्टैंडर्ड मेथड. ठीक है? नाउ लेट्स डिस्कस दैट मेथड. आपके पास कोई भी इस तरह की इक्वेशन होगी, कोई भी मॉडुलस इक्वेशन होगी, आपने क्या करना है, लेट्स गो थ्रू दैट प्रोसेस. Now this is very important. ठीक है? पहले वाला जो था, that was background. This is what the modulus function is. This is how it behaves. और आप logically सोच के किस तरह से इस तरह की equations को solve कर सकते हैं. Okay? But now let's go through a formal process जो आप use किया करेंगे to solve such equations. ठीक है? Let's start with the same equation. X - 4 = 9. मैंने वो लिखा था ऊपर. Let's start with that. X - 4 modulus equals 9. Now, how are you going to solve this equation? हमने देखिए ऊपर क्या किया था, हमने कहा था या हमारे पास +9 आ जाए या -9 आ जाए अंदर. इन दोनों में से कोई चीज चाहिए होती है. ठीक है? तो हम बेसिकली उसी लॉजिक को यूज करते हुए ना, हमारे पास एक मेथड होता है. हम क्या करते हैं, जब भी आपके पास मॉडुलस आ जाए इस तरह से इक्वेशन के अंदर, मॉडुलस से डायरेक्टली डील करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता. हमें किसी तरह से मॉडुलस को रिमूव करना होता है. अब मॉडुलस को रिमूव करने का तरीका क्या होता है, आपने मॉडुलस हटा के उसकी जगह पे +- लगा देना है. मॉडुलस रिमूव कर देना है और उसकी जगह पे +- लगा देना है. All right? Now, what happens when you do this? You get two possibilities. One possibility is that you have plus x minus 4, that equals 9. And the other possibility is that you've got minus into x minus 4, and that equals 9. These are two possibilities that you have. तो आपने क्या किया, जो मॉडुलस साइन था उसको आपने रिमूव करना है. वो रिमूव कैसे होएगा, यू गोइंग टू पुट +- इन प्लेस ऑफ दैट. +- लगा के मॉडुलस रिमूव हो गया, पूरे ब्रैकेट के साथ आपका +- लग गया. ठीक है? And now you can solve this equation. From the first equation, you get x minus 4 equals 9, and that gives you x equals 9 plus 4, and that is 13. And from the other equation, you get minus x plus 4 equals 9,
and when you take, let's say, x to the other side, x को अगर हम right side पे ले जाएं और 9 को यहाँ पे ले आए, we get 4 minus 9 here, and x equals -5. This is the other solution that we've got. So these are the two answers that we get from this thing. Does that make sense to everyone? Any questions on this? Any quick questions before we move on? No? Okay, so that's good. Let's move on to the next thing, to another example, in fact. Now, let's say we've got something like this, modulus of 2x plus 5, and that equals, let's say, modulus of x minus 3. You got something like this now. Okay, modulus of 2x plus 5, that equals modulus of x minus 3. We want to solve this equation now. You've got modulus on both sides. अब एक साइड पे नहीं है, दोनों साइड से मॉडुलस आ गया आपके पास. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? मॉडुलस को रिमूव करने का रिमेंबर क्या तरीका है? आपने प्लस माइनस लगा देना. अब यहां पे देखें, यू गॉट मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, सो यू माइट थिंक that you need to put modulus on both sides, okay? And that will be perfectly okay. That would not be an issue. You can do that. You get plus minus 2x plus 5 equals plus minus x minus 3, right? So that's what you could think like. But this thing gives you 4 different cases. एक केस क्या हो सकता है कि लेफ्ट साइड पे प्लस आ रहा हो, साइड पे भी प्लस आ रहा हो. एक केस हो सकता है लेफ्ट पे प्लस आ रहा हो, राइट पे माइनस आ रहा हो. एक हो सकता है लेफ्ट पे प्लस, राइट लेफ्ट पे माइनस, राइट पे प्लस, और तीसरा चौथा केस हो सकता है लेफ्ट पे माइनस और राइट पे भी माइनस. Now if you were to think about this, if you think about the equation, ये पूरी की पूरी एक equation है. तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ रहा था? 2x plus 5 यहाँ पे प्लस के साथ, और राइट साइड पे आपके पास आ रहा है x minus 3. अगर आप ये फर्स्ट केस देखें और ये लास्ट केस देखें, they are essentially exactly the same. इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन, they are exactly the same, because अगर आप ये जो हाईलाइट किया मैंने इक्वेशन, इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, you get this equation. So these are exactly the same. तो ये वही दो इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी वो सेम है आपस में. Now let me write down these equations that are in the middle. ये इक्वेशन लिख लेते हैं. यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? प्लस इंटू 2x plus 5, और राइट साइड पे you've got minus into x minus 3, लेफ्ट पे you've got 2x plus 5 here, and here you've got x minus 3. These two equations are also the same. Why? Because again, अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करो, this equation, ये दोनों इक्वेशंस आपस में सेम है. तो अगर आप ये दोनों साइड्स पे प्लस माइनस लगाते हो, इवेंचुअली दो यूनिक केसेस ही आते हैं. एक आपका ये यूनिक केस है, एक ये यूनिक केस है. जो बाकी दोनों हैं, दीज आर जस्ट रेपिटेशंस ऑफ द सेम. ऑलराइट, तो आपने क्या करना है? अगर आपके पास दोनों साइड्स पे भी मॉडुलस आ जाए, all you've got to do is just put modulus sign on any one of the two sides. दोनों साइड्स पे लगाना जरूरी आपके लिए नहीं होगा. ठीक है? So this was again the logic behind this. Now what do you have to do? You just need to input plus minus on any one of the two sides. If you've got modulus on both sides of an equation, आपने क्या करना है? मॉडुलस को खत्म करने के लिए किसी भी एक साइड के ऊपर आपने प्लस माइनस लगा देना है. दोनों साइड्स पे लगाना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आपके पास दो ही यूनिक आंसर्स आएंगे. ओके, तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस हम क्या कर सकते हैं? वी कुड पुट प्लस माइनस ऑन लेट्स से लेफ्ट साइड, और वी कुड पुट दैट इन द राइट साइड. इट डजंट मैटर, दोनों में से किसी में भी डाल, राइट? सो मैं यहाँ पे राइट पे डालूं, लेफ्ट पे डालूं, इट डजंट मैटर. सो लेट्स से मैं राइट पे डालता हूँ. सो पिछले मैंने लेफ्ट पे डाला था, यहाँ पे लेट्स पुट दिस ऑन द राइट साइड. Okay, and let's solve this equation now and see what we get from this.
अब क्या करेंगे? We get two possibilities, 2x plus 5 equals x minus 3, and the other possibility is 2x plus 5 equals minus into x minus 3. ठीक है, लेफ्ट वाले केस से आपके पास क्या आ गया? x equals -8, और ये राइट वाली आप सॉल्व करेंगे, इससे आपके पास क्या आता है? 2x plus 5 equals -x plus 3, and this gives you 3x equals -2, and x equals -2 over 3. So these are the two answers that we've got for this equation. ठीक है, तो आपने क्या किया? जब भी मॉडुलस आया, आपने मॉडुलस तो खत्म करना है इक्वेशन के अंदर आप क्या करेंगे? मॉडुलस साइन को आपने खत्म कर दिया और उसकी जगह पे प्लस माइनस लगा दिया. इफ यू हैव मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, you put plus minus on any one of the two sides. It doesn't matter which side, you will get the same result eventually. ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए this is all that you need to know. All right, इस पे कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? Any questions, anyone? No? Can I have raise of hands from everyone if you understand this? Not physically on Zoom. Okay, good. That's good to know. Let's move on then. Let me just connect my charger before the battery dies. Oh yeah, it's working now. All right, good. So this is what we have. Now, let's move on. Equation solve करने का ये तरीका है, ठीक है? Modulus remove करना है, plus minus लगा देना है, solve करना है. That's all you've got to do. ठीक है? अब ये you have to keep this in mind now. All right, let's move on. Now, sometimes you end up with a problem when you solve such equations. Okay. Now, for instance, let me write down an equation here, and it might look something like this. Let's say we've got x plus 5 modulus that equals -2. Now, let's say we've got an equation like this. Okay. We've got modulus on the left side, but a number on the right side. And let's say we wanted to solve this equation. Now, what have we just learned? कैसे solve करते हैं इस तरह की equations को? आप modulus remove करते हो और plus minus लगा देते हो. That's all we do, right? तो आप modulus remove कर दो और plus minus लगा दो. अगर हम left side से modulus remove कर दें और plus minus लगा दें उसकी जगह पे, what do we get? We get plus minus x plus 5 equals -2. There are two possible cases that we get. Either x plus 5 equals -2 or minus into x plus 5 equals -2. इन दोनों केसेस आपको क्या मिलता है? एक आपको मिल गया x equals -7 और दूसरा आपको मिल गया -x minus 5 equals -2, and from that you get x equals -3. ये दो solutions आपके पास आते हैं. Now, to input these values back in this equation, you will realize they don't really satisfy this equation. ये दोनों ही इसके answers नहीं है. ये दोनों ही इसको satisfy नहीं करती हैं. Can you try that? -7 input करें, -7 input करें, तो आपको क्या मिलता है? -2 का मॉडुलस. -2 का मॉडुलस तो +2 होता है. हमें -2 चाहिए था. So -7 is actually not satisfying the equation, right? तो क्या मसला है इसके अंदर? Any ideas? What could be the problem? Sir, this isn't possible because modulus can never be negative.
This is impossible because the result that we get from modulus can never be negative. So Yes, ये sir. equation ही basically, yes. So this equation is actually something that does not have a solution. इसका कोई solution है ही नहीं. Why? Because it doesn't make logical sense. अब यहाँ पे देखें modulus of x plus 5, modulus करता क्या है? Modulus इसके अंदर जो भी आप input करते हो उसको positive कर देता है. Negative result तो आ ही नहीं सकता. लेकिन हम ये methods use कर रहे हैं, हमें answers मिल रहे हैं फिर से. इसका मतलब इस method में कोई मसला है, right? Basically होता क्या है? हम modulus को convert करते हैं किसी और form के अंदर. हम मॉडुलस, बिकॉज ये प्लस माइनस जो हमने लगाया, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग एज मॉडुलस. वो बिल्कुल सिमिलर उससे बिहेव करता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम. तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम ये मेथड यूज करते हैं ना, जो हमें आंसर्स मिलते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते. कभी कभी ये तो एक केस है जहां पे दोनों आंसर्स ही गलत है. कैम्ब्रिज में आपको ये वाला केस नहीं आएगा, बट विल डू अनदर एग्जांपल अभी. जब होगा कि दो आंसर्स आ रहे हैं आपके पास, उनमें से एक सही है और दूसरा गलत है. यहाँ पे तो दोनों पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे दोनों गलत है. ये भी गलत है और ये भी गलत है. बोथ ऑफ देम डू नॉट सैटिस्फाई. लेकिन you could have another case like this. Let me actually write down another example here. उसके बाद फिर देखते हैं. So you could have something like this: modulus of x minus 3 that equals 2x plus 5. You've got this equation. Now let's use that method and solve this equation. क्या करेंगे? मॉडुलस रिमूव करेंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, किसी भी साइड पे लगा दें, उससे फर्क नहीं पड़ता. लेट्स से मैं प्लस लेफ्ट साइड पे लगा देता हूँ, आप राइट पे लगा लें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट फ्रॉम दैट. इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. x minus 3 on the other side you've got 2x plus 5. Now you split it into two parts, you get x minus 3 equals 2x plus 5, and on the other side you've got minus into x minus 3 equals 2x plus 5. Let's solve these equations. Left वाली equation से आपको क्या मिलता है? x को अगर वहां पे ले जाएं, that gives us x. 5 को यहाँ पे ले आए, minus 3 minus 5, that's minus 8. एक आपको ये solution मिल गया. दूसरे से आपको क्या मिला? minus x plus 3 equals 2x plus 5. x goes to the other side, it becomes 3x. 5 comes here, it becomes minus 2. x की एक वैल्यू आपके पास आ गई minus 2/3. ये दो आंसर्स आपको मिल रहे हैं. अब आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? जब भी आप इस तरह से इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जब भी मॉडुलस आ गया, आपको एक चीज हमेशा करनी पड़ेगी. वो क्या होगा कि आपको अपने आंसर्स वेरीफाई करने होंगे. क्यों? क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो सारे सही नहीं होते. हो सकता है दोनों सही हो, दैट इज पॉसिबल, बट इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि एक सही हो एक गलत हो. तो आपको वेरीफाई हमेशा करना पड़ता है कि क्या ये दोनों वाकई में उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते. ओके, लेट्स चेक दैट. -8 इनपुट करके देखते हैं. यहाँ पे उस इक्वेशन के अंदर -8 इनपुट करके देखते हैं. व्हाट डू वी गेट? -8 minus 3 का मॉडुलस. Right side we've got 2 into -8 plus 5. Now we've got -11 modulus. On the other side, you've got -16 plus 5, and we're getting -11 on the right side and +11 on the left side. Is that correct? This is not correct, right? This is wrong. So ये आपका आंसर ठीक नहीं है. Let's check the other one. -2/3. -2/3 -3. मैं उस इक्वेशन में इनपुट कर रहा हूँ जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी थी. Modulus on the left side, on the right side I've got 2 into -2/3 plus 5. लेफ्ट साइड पे मुझे क्या मिला? इसको आप कैलकुलेटर पे डालें. यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट एलसीएम एंड एवरीथिंग. डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालें और देखें आपको क्या मिलता है. ठीक है, ये चीज पूरी कैलकुलेटर में डालें. -2/3 -3, दैट इज -13/3. नो, -11/3. -11/3 का मॉडुलस. ऑन द राइट साइड यू हैव -4/3 plus 5. What do we get from this? We have 11/3 on the right side. Left side पे भी जब -11/3 का मॉडुलस करेंगे, we are getting 11/3, and that is correct. So the second answer that you've got in the right side, that is correct. तो जब आपने वो इक्वेशन सॉल्व की, आपको दो आंसर्स मिल रहे थे.
एक x इक्वल्स -8 मिल रहा था और दूसरा x इक्वल्स -2/3 मिल रहा था, आपने क्या करना है, दोनों आंसर्स को वेरीफाई करना है, दोनों आंसर्स को चेक करना है और देखना है कि उनमें से कौन सा सही है, और फिर आपको ये स्पेसिफाई करना है कि वो सही है और दूसरा गलत है. सो यू हैव टू इग्नोर दिस अदर आंसर. दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू लूज 1 मार्क हियर. ठीक है, तो क्या चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, whenever you are solving equations, and we'll find out for inequalities very soon as well now, whenever you're solving equations or inequalities that involve the modulus function, you always have to verify your answer. Okay, now let me just write that statement here at the end, because that's the takeaway from this discussion जो आपको हमेशा करना है. Whenever you are solving equations or inequalities पे आते हैं, involving the modulus function, always verify your answers at the end. ये करना जरूरी होगा आपको. ठीक है, जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाएगा, वेरिफिकेशन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. इज दिस ऑल राइट? इस पर कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? ये आपके इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस है. अब इसमें एक एडिशनल चीज क्या हो गई, जब भी कोई आपके पास आंसर्स आएंगे, आपको एंड पे वेरीफाई करना होगा. हो सकता है कि उनमें से एक कोई सेटिस्फाई ना कर रहा हो, दूसरा कर रहा हो, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा.